Province of Kautilya, Arthashastra, 21st century. 20 Arthashastra in 21st century by Dr. Suresh Rangarajan. So these are basically the highlights for this course. We have had like 168 registered participants, and a few of them will be presenting a report here. We had two live sessions. One is today's, and one in the beginning. We have recorded sessions for 25 total videos, 12 discussion forums, 17 quizzes, assignments, feedback forms, and these lectures are available on YouTube also. So till yesterday, we counted 7,200 plus viewership, and this viewership is going to increase in coming time. We have been, as just mentioned here, we have some like circulated feedback forms, and this on the basis of feedback forms, we have a report, and we are overwhelmed by the feedback that we have received from our participants. So they have rated 96% of the participants have rated the LMS platform as excellent, ever very good, and excellent. Again, for the time I spent, 62% of the participants have spent 3 to 4 hours on the program, for the program on a daily basis. User friendliness for LMS system, like 72%, 72% agreed that we strongly agreed that the interface is very user friendly. Another 27% agree. Rating for the quality of sessions in the program, we again have like 96% of the participants felt that the sessions were very good to excellent. And despite we have had a range of topics in this program, our participants do feel that there should be more sessions. So possibly under the leadership of our Honorable Chairman, Sir, Governing Body, our Principal Sir, and IQAC Director, Lata Ma'am, we might come up with a longer program, maybe for a month or a long incoming time. So in that time or in that program, we'll be able to include these sessions. So that's there, and we have asked the participants whether they will be willing to recommend any FDP or upcoming FDP that is offered by our Teaching Learning Center of Ramanujan College. Around 97% of them agree that, and they are willing that they will be sharing with their friends and colleagues. Quality of speakers, although these questions should not be asked because we are very confident, and our participants also know that the quality of the speakers has been very good, but this is part of the like technicality. So we asked this question, and 97% rated very good to excellent. And overall knowledge addition for this program is there, like 53% agreed that excellent knowledge addition, and 45% agreed that very good knowledge addition has been there in the field or in the topic related to the topic that has been offered under this program. This graph tells us about the overall rating of the program. 76% felt that the program has been excellent, and another 23% felt that the program has been very good. Today we have the valedictory day, and on this valedictory day we have two very eminent guests to speak. We have Dr. Asawari Bapat ma'am, and we have Dr. Chandra Prakash Dwivedi ma'am. So with this presentation, I now hand over the platform back to ma'am for further proceeding. Thank you very much. Thank you, Chandan sir, for sharing a report with us. Okay, so moving forward. So today, for this momentous occasion, we are privileged to have in our midst the visionary leader who steered the helm of our academic institution, our esteemed principal sir. His unwavering commitment to academic excellence has propelled our institution to new heights, and his presence here today
underscores the significance he places on the continuous growth and development of our institution. As we embrace this journey of professional development guided by his vision, let us absorb the wealth of knowledge and experience he brings to this forum. Welcome, sir. Once again, we eagerly anticipate your speech and look forward to gain valuable knowledge from your words. Thank you, Vishaka. Thank you. Namaskar. Good afternoon to everyone, and I especially welcome our guest Ashwari Bapaji, who has joined from Nepal. She has just joined this program. Welcome, ma'am. Our special guest today, none other than Chandra Prakash Dwivedi ji, Bapat ma'am, our chairman sir, all our colleagues, organizing team members, and all the participants from Pan India who have joined this program on Kautilya's Arthashastra. Once again, I welcome all of you to this valedictory function of this 2-week online interdisciplinary refresher course, basically meant for teachers, but some professionals have also joined this program. Let me, say that this program is a unique in its kind. And I think the idea basically is, culminated with the help of our chairman, governing body, Dr. Jigar Inamdar, and our faculty members. See, this Kautilya's Arthashastra has everything lined up in this. It is not Arthashastra only, it is, politics, administration, management, day-to-day problems, everything is included in this. Now, this 2-week program cannot be sufficient to explain Kautilya's Arthashastra. Of course, we have tried, you have seen the report of Chandan that we have tried on various topics, the experts in this area, but this need to be expanded. For sure, this need to be expanded. And moreover, the experts of this area from different fields who specialize in different functional areas need to be involved in such programs. Of course, we have done it, but more need to be done. Like, I was talking to Chandra Prakash Dwivedi ji. He's a filmmaker, professional, who started this idea by making the serial on Chanakya. And, lot of learning has happened out of that. And this is a very good, forum where he will share some of his views with our participants, because they have gone into the, Chanakya's work. So only then, some film or, the serial can be made. Now, with this, I can only say, speaking very little on this because I am not an expert on this, I can only say that the Teaching Learning Center at Ramanujan College tries to involve itself, try to reach to everyone on different topics. Like, in the opening ceremony also, our chairman sir will also speak to you on Indian knowledge system. We are trying to set up a center, and which will be inaugurated on 22nd December. And there we have already launched a course on Bhagavad Gita. So similarly, we will be launching different courses on Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parampara, on Veds, on other things which are missing from our academic world. And definitely all the professionals and experts in those areas, we would like to listen. First of all, teachers need to understand the system. Only then we can take this to the classroom. So with this, once again, I welcome all the participants, all the dignitaries for this program. And I'm sure that with this 2-week program, some benefit has gone to you, and I'm sure you will take it to the classroom, to the subject relevant which you are talking in your classes, because this subject is relevant everywhere. So you need to relate the experiences of this program with the students, in your classroom. Thank you very much. Over to Vishakha. Thank you, sir. Thank you so much. I just want to express my sincere gratitude for the inspiring speech sir has delivered. Sir, your words resonated deeply with us. Thank you for your continuous guidance, motivation, and dedication to our college community.
Next, it is with great anticipation and enthusiasm that we extend a warm welcome to our chairman, Sir Dr. Jigar Inamdar, for this program. Sir, your vision and support plays a pivotal role in fostering a culture of continuous learning and growth within our institution. In his words, education is not merely about imparting knowledge, it is a continuous journey of learning and refinement. This refresher course stands as a testament to our commitment to that journey, sir. We are fortunate to have leaders who companion innovation, nurture a culture of collaboration, and invest in the growth of the institution. So we are honored to have you guide us through this program. So without further ado, let us extend a warm welcome and request Sir to share his enriching experience with all of us. थैंक यू, धन्यवाद विशाखा। आज दो ऐसे स्पीकर हमें प्राप्त हैं जिनका मार्गदर्शन सच्चे अर्थ में हमें एनरिच कर पाएगा। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने चाणक्य को भारत के हर घर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। चाणक्य सीरियल के द्वारा एक बार फिर से आज की जनरेशन में चाणक्य को समझने की जो रुचि पैदा हो पाई, यानी ज्ञान जो होता है वो सिर्फ पुस्तक से प्रसारित नहीं होता। ज्ञान का प्रसार करने में पुस्तक के जितना ही रोल अलग अलग माध्यमों का भी हो सकता है, और फिल्म और टेलीविजन ये आज के समय के सबसे बड़े और सबसे असरकारक माध्यम है। इस माध्यम का सदुपयोग करते हुए चंद्र प्रकाश जी ने चाणक्य को हर घर तक, हर मन तक पहुंचाने का जो पुण्य कार्य किया है, मैं रामानुजन परिवार की ओर से आदरणीय चंद्र प्रकाश जी के उस प्रयास को और आज हमारे इस प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति को हृदयपूर्वक वंदन करता हूँ, हृदयपूर्वक उनका स्वागत करता हूँ। के इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस में कौटिल्य अर्थशास्त्र का सर्टिफिकेट प्रोग्राम पढ़ाने के लिए आए थे, और मैं हमेशा कहता आया हूं कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो सिर्फ पुस्तक नहीं है, ज्ञान का भंडार है, और हमने उस ज्ञान के भंडार को इतना पवित्र स्थान दे दिया है कि हम उनको छूते ही नहीं है। जैसे भगवान की मूर्ति को हम मंदिर में नहीं छूते हैं, बहुत दूर से दर्शन करके चले जाते हैं, वैसे ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, भारत के संविधान को हम इतना पवित्र बना के इतने दूर सजा के रख देते हैं कि बस दूर से दर्शन कर लो, जब चाहे कोई भी ज्ञान की बात कौटिल्य के नाम पे चेप दिया करो, लोग मान ही लेंगे कि कौटिल्य ने ऐसा कहा ही होगा। तो कोई खोल के पढ़ने की जो वृत्ति होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। पर असावरी मैम और मीनल ओक मैम जब वडोदरा आए और उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र को फिर एक बार एक नया रिलेवेंस देने का प्रयास किया, मैं रामानुजन कॉलेज में जब टीचर्स के साथ इस विषय पे बात हुई कि रिविजिटिंग कौटिल्य अर्थशास्त्र, इस विषय पे एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी टीम करना चाहती है, पहुंची है, मैं शब्दों में उसको बयां करना मुश्किल है, पर मैं पूरी टीम को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा विषय चुना जो थोड़ा गहन है पर उतना ही जरूरी है। और मैंने एक बार असावरी मैम को डिस्टर्ब किया था, मैं डिस्टर्ब करता रहता हूँ उनको, वो जब बर्मा थे तब भी उनको डिस्टर्ब करता रहता था, अभी जब नेपाल आ गए हैं तब भी उनको डिस्टर्ब करता रहता हूँ। मैंने एक बार उनको ये पूछने का प्रयास किया था, मैंने अपनी टीम को 2 पुस्तक के बारे में बताया था कि अगर अंग्रेजी में कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ना हो तो सबसे ऑथेंटिक वर्जन आरपी कांगले का माना जाता है, और हिंदी में अगर पढ़ना हो का आदरणीय असावरी मैम का भी, उनका और आदरणीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का हमारे साथ ये पहला एसोसिएशन हो सकता है, अंतिम एसोसिएशन नहीं होगा। ये मैं परिवार के एक सदस्य के रूप में उनको एंश्योर करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इस विषय के साथ हमें हमेशा जोड़े रखें, और हमें इस विषय के साथ जोड़े रखने के लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप आज जुड़े हैं, हमेशा जुड़े रहिए, यही निवेदन है।
हमारे आदरणीय प्रिंसिपल प्रोफेसर एसपी अग्रवाल जी एक आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला व्यक्तित्व है, और ऐसा व्यक्तित्व हमें प्राप्त है। हम सब सद्भागी हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे इस महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय की तरह अपने आप को विकसित किया है। और जो काम हम कर रहे हैं, ये महाविद्यालय का काम शायद नहीं होगा, ये विश्वविद्यालय का काम है। विश्वविद्यालय का काम करने के लिए मैं रामानुजन महाविद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व को और पूरी टीम को हृदयपूर्वक फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं। और मैं हमेशा कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं, तो फिर एक बार मेरा कंट्रीब्यूशन वही होगा कि मैं जितना कम बोलूं उतना ज्यादा समय असावरी मैम को और आदरणीय चंद्र प्रकाश जी को हम दे पाएंगे। मैं ठीक अवस्था में नहीं हूँ। आज भी उद्घाटन सत्र में कुछ ऐसा हुआ था, वहां पे था। आज भी एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में मेरी गाड़ी में बैठ के मैंने एक छोटा सा सेटअप स्टूडियो का बना दिया है गाड़ी में ही, क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन लेक्चर्स मुझे कार में से ही देने पड़ते हैं। फॉर्चुनेटली आज गाड़ी चलाते हुए नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी एक जगह पर बेसमेंट में रखी हुई है और वहीं से आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो आप सबका फिर एक बार धन्यवाद। पूरी टीम का, हमारी पूरी टीम जिन्होंने इस विषय को आप सब तक पहुंचाया है, मैं पूरी टीम को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार आदरणीय चंद्र प्रकाश जी और आदरणीय असावरी बापट जी दोनों का हृदयपूर्वक हमारे परिवार में स्वागत करता हूं। परिवार में स्वागत के साथ ये पूरे जीवन का आपके साथ हमारा अनुबंध रहेगा, ऋणानुबंध रहेगा। मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for your guidance and unwavering support in steering our college towards the successful execution of the program. Your visionary leadership has been a guiding light, inspiring us to strive for excellence. We are truly grateful for your mentorship, sir. Thank you once again. The next segment is the feedback session, where we will call upon 2 or 3 participants who have participated in this refresher course, and they will share their feedback with all of us. I would like to call Miss Neetu Kumari, Assistant Professor, Department of Economics, Ranchi University. Ma'am, can you unmute yourself and share your valuable feedback with all of us? If she's not there, you can call the next name. Okay. Okay. So next is Miss Nidhi Prakash, Department of Psychology, Art Faculty, University of Delhi. Ma'am, can you unmute yourself and share your feedback with us? Maybe because of the technical glitch or some other issue, maybe I they are think not. Neetu is Okay. trying to join, Okay. as I can see. Okay. Maybe we can move forward and we can come back to them once they have joined. Neetu has joined. Neetu has joined. Okay. को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने महाविद्यालय और रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद दूं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, जिसमें आप लोगों ने हमें जोड़ा और हम लोग एक पार्टिसिपेंट बने। तो यहाँ पर मुझे मिलकर आकर आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा और अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के इस एक कड़ी के रूप में मैं यहाँ जुड़ पाई और बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद मिला इतना अच्छा कार्यक्रम में शामिल होकर। 2 सप्ताह का ये जो कार्यक्रम था, इसमें आसावरी बापट मैम और डॉक्टर DK श्रीवास्तव सर का मैं बहुत आभारी महसूस करती हूँ। उनका अपना आभार उनके प्रति प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हम लोगों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जोड़ा। और चूंकि ये संस्कृत में था और मेरा एक विषय बड़ा प्रिय रहा है संस्कृत, और संस्कृत के साथ हिंदी में उसका अनुवाद और फिर अंग्रेजी में भी उसके बारे में बातचीत, तो ये अच्छा रहा और हम लोगों को अपने आप को कनेक्ट करने की बहुत खुशी महसूस हुई कि चाणक्य को, चूंकि हम लोगों ने अभी हमारे साथ डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी हैं, और जब हम लोग छोटे से थे तो हम लोगों ने चाणक्य सीरियल अपने देखा है और उसके बाद खुद को कनेक्ट कर पाए हम और देख पा रहे थे कुछ हम लोग। मैं बताते हुए बहुत प्रसन्न हूँ कि हम 3 टीचर्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से, हम तीनों एक साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो हम लोगों के लिए भी आपस में इसको डिस्कशन करते रहना और सुन
पाना, समझना और उसके बाद इसको एनालाइज करने में बहुत खुशी हुई। मैं आग्रह करती हूँ कि ये इस तरह के कार्यक्रम और किए जाए और हम लोगों को नोटिफिकेशंस दिए जाएं कि हम लोग इसमें शामिल हो सके। साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी बात कहीं ऊपर तक भी जा सकती हो, तो हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि संस्कृत को वापस क्लास 6 से 10 तक कंपलसरी करना चाहिए, ताकि हम जो अपनी ज्ञान परंपरा को भूलते जा रहे हैं या हम जिनसे दूरी बना पा रहे हैं, तो संस्कृत के बिना हम नहीं इससे जुड़ पाएंगे। जैसा कि अभी इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने देखा कि न सिर्फ सोशल साइंसेस बल्कि और भी दूसरे जो साइंसेस है उन सब के साथ हमारा अर्थशास्त्र और हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या टैक्सेशन हो या हमारा पॉलिटिकल साइंस है, कहीं भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने ज्ञान को वापस पीछे तक जाने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आशावरी बापट मैम और डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेश रंगराजन सर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को जो फॉरेन रिलेशनशिप है इंडिया का, और इसको कल जब वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे तो इतना कनेक्टेड हम लोग महसूस कर रहे थे कि बहुत बहुत धन्यवाद उनके इस सुंदर ज्ञान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, रामानुजन कॉलेज का। और मुझे बहुत खुशी है और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि इस महाविद्यालय के साथ किसी भी तरह के कार्यक्रम में हम जुड़ते रहे। धन्यवाद। Thank you, Neetu ma'am. Thank you for your valuable feedback. Next, respected distinguished keynote speaker, Dr. Dr. Nidhi is also joined. Okay. Okay. Dr. Nidhi. Nidhi ji, you are unmute. Please unmute yourself. Can you hear me? Am I audible now? Yeah. Please go ahead. Yes. Please go ahead. Namaskar, esteemed faculty members. It is an honor and a great pleasure to be part of this course and to be in company of you people. I think this is a most memorable occasion, and I never thought the glory of Indian history in terms of the economic policies and the social policies and the taxation as well. So it was a great experience. I like to warmly welcome everyone in attendance and express my gratitude for being part of this extremely memorable course online, revisiting Kautilya Arthashastra. I would like to share my experience that how I happen to be a part of this course. I'm a faculty member in Department of Psychology. I teach in arts faculty in North Campus, University of Delhi. And I was looking for a refresher course, and typically the refresher course that were popping up were on research methodology. But I was looking and for something which is new, novel, and connects me to the history and the glorified past of India. And I came across this title. It was just a day before when the program was about to start. I happened to register for it, and I'm grateful to Ramanujan College to accommodate me at a very last moment. But still, I was a little skeptical because I come from psychology and this is more about political science and social sociology. So I was a little skeptical about whether I will be able to connect the threads between politics and organizational behavior. So organizational behavior is something I teach. But as the lectures transpired, it was an eye-opening experience for me, firstly at multiple levels. The kind of know-how we have, the history of India has produced is immense. It is stupendous, and it is extremely out of ordinary. And secondly, the kind of passionate faculty members and teachers that we have today in our country. They are pursuing their careers, their passions only for the love of their passion. They are like, I mean, the various faculty members who were part of this coursework, I mean, I would like to personally call out their name and thank them once again. Firstly, I would like to thank the program director of Ramanujam College, then Dr. Asavari Bapat ma'am. She is such an eloquent speaker, such a humble personality, and such a Sanskrit scholar. I never thought that we have so much of a know-how in our own country, and such a know-how. So it was a great experience listening to all of our lectures. Then Professor Colonel Pradeep Kumar. I never thought that Kautilya has
his extension to different domains of existence. He comes from defense, and how Kautilya is practiced even today in defense. It was an out of ordinary experience for me. Dr. Nishant Kumar from political science, he was also amazing. Dr. D.K. Srivastav, listening to his lectures on taxation, I was totally surprised and amazed that our current taxation policies after centuries is still on the lines of what Kautilya was practicing or was advising, advocating in those times. He showed all those graphs and the different permutations and combinations and the policies, the ratios and proportions in which we are drawing and executing taxation policy is basically on the same lines what we had been doing in those times of Mauryan Empire. So it is a very good connect between what we are doing today is nothing more but is an extension of our past, and we are still somewhere in harmony with our past. So that was a nice thing to know. Dr. Amna Mirza, she is such a full of energy and eloquent speaker. Her lectures were so good and so rich in content. It was an extraordinary experience. Dr. Ananath Ganguly ji, Dr. Sudhir Singh ji, Dr. Arvind Gupta, each lecture was unique, and there was not a moment I felt that I should be away from the screen. Everything, in fact, doing this course, I feel that it should be done all over again. And I want to give two input, kind of a feedback. Please provide some resource material, because the way you distinguished speakers are thorough in your subject. We cannot depend on our memory, and we really want to go to the right sources for the right education and right knowledge for us to acquire and to take it on further to different students. So it is good if someday I can get some good sources right from the horse's mouth, that what are the sources we should study from, because there are so many interpretations, but what is right and what is useful and what is credible, what has an integrity, only a learned like you people who have dwelt into the subject over years would know and can recommend. So that is a feedback I would like to say. I am once again, I would like to thank Ramanjuram College for organizing it. I'm also very thankful that such courses are now available in online mode, because looking at the contemporary work pressures, time pressures, online modality is the only opportunity and window for a lot of working people. So respecting and regarding this is a great development in academics, and I'm thankful to this. Overall, an outstanding experience, and definitely would like to connect on the same topic a lot more many times. So requesting the organizing team to please continue organizing on the subject, and a great, very, very laureate of speakers that I encountered in this particular course. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable feedback. Yeah. So moving forward, respected distinguished keynote speaker, Dr. Asavri Bapat ma'am, our external advisor of the program. It is with great honor that we welcome you to our program on the profound subject of Kautilya Arthashastra. Your expertise in this timeless text is a beacon guiding our journey into the realm of governance, strategy, and intellectual enlightenment. Today, we have the privilege of gaining insight into the profound principles that Kautilya advocated for effective administration, diplomacy, and statecraft. Dr. Asavri Bapat ma'am is a director at Swami Vivekanand Cultural Central, Embassy of India, Nepal. She is a passionate Sanskritist and a vivid reader. Her research scholarship is recognized by the Royal Asiatic Society, Mumbai. Her multi-dimensional research interest and expertise on Kautilya Arthashastra are really appreciated. She is spreading the message of Indian culture, Sanskrit on the international platform as well. Thank you, ma'am, for gracing us with your expertise. We eagerly await the enlightenment you will bring to us, shaping not only the understanding of Kautilya Arthashastra, but also the approach to education and leadership. Ma'am, can you unmute yourself? Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. So thank you very much, first of all, for giving me this opportunity to speak on my most beloved topic, that is Kautilya Arthashastra.
I'm grateful to Jigar, to the Ramanujan College, principal of Ramanujan College, the entire technical and administrative section, and especially Isha and Aparajita, because they bear me with my delay and everything, whatnot. So I'm really grateful, Isha and Aparajita, and the entire technical team as well. And as in the beginning, as you have mentioned, ki this topic is literally universal. Some 4th century BC, the text was composed, and we are under impression ki that is the first text, but no, it is not like that. There are so many predecessors mentioned by Kautilya. So it shows that the topic or the science of polity was in practice, and it was thoroughly studied by our ancestors. Definitely, the complete text was given by Kautilya, but in Vedas we have references. Atharva Veda, which is also called as the Kshatriya Veda, naturally it deals with the topics which are under science of politics. Then apart from that, it is not only Vedas or Ramayana and Mahabharata, but even in dramas also, if you will see, or in the Kalidasa's literature, if you will see, you get many references of politics. Rather, I wrote one article and I believe that Kalidasa's intention while writing Raghuvansha was not to write a poetry, but to teach the science of politics. And that is why I consider that Raghuvansha is a sugar-coated pill given by Kalidas to understand the Rajaniti. And so many examples I have quoted in that article that Kalidasa was a thorough Rajanitijna. And I think in my lectures also I have mentioned that for writing a poetry, how many topics the poet should know. In the list of those topics, Arthashastra is very important topic, because if they are writing poetry of kings and queens, so how they should behave, because yatha raja tatha praja is the rule. And naturally, the king should be, his behavior should be in such a way that people should follow him. And that will make society rich, they will get enriched by the practice of the king, by behavior of the king. And that is why Kalidasa wrote that Raghuvansha. That is what I feel always. But it is not only that in ancient time this topic was studied. In my third lecture, I have given the big auspice of Arthashastra, where I have clearly mentioned that in which text we get references, and even in Peshwa period, we have the references that Chanakya was well studied. So, being a Maharashtrian person, I always thought that whether Shivaji has studied Kautilya Arthashastra or not. And I was surprised to see when I started learning Kautilya Arthashastra, I was so surprised to see that the sutras were given by Kautilya me previously. But I was aware about the Shivaji's history, being a Maharashtrian person. So when I started actually learning Kautilya Arthashastra, I could correlate the sutra and Shivaji's behavior. This clearly shows that maybe traditionally in the Maukhika tradition, the Arthashastra was in practice. And as Nidhi ma'am has suggested, being a teacher of psychology, in Arthashastra also, we understand the way Kautilya thinks. He definitely gives thought to psychological perspective of society, of individual person, and of king. Of course, for that, we need to work hard. We have to find out these topics, different topics, and every time you get some or the other new thing from Kautilya Arthashastra. And especially in the beginning, I started with spy system, but slowly then my interest developed. And then when I started learning, the first namana, we called it as Valedictory stanza, which is Namo Shukra Brahaspatibhyam. And to my surprise, when in the Arthashastra,
the order is maintained by Kautilya. The most important character or the person comes first, and then the remaining people or the characters or whatever is idea. But whatever is most important is always in the beginning. And why Kautilya has mentioned Namo Shukra Brahaspatibhyam. Why Shukracharya is saluted by him in the beginning. And I was constantly thinking on that topic, and suddenly I realized that this is basically the difference between means and ends. So end should be, according to Kautilya, it should be Devaraja. Because in our society, in our tradition, Raja is not for the bhoga, but for Tyaga. It is not for self-enjoyment, but for the benefit. That is what Yoga Kshema, the concept Yoga Kshema I have mentioned. So for the benefit, for the well-being of the entire society, it includes not only human beings, but animals, trees, birds, and everything. So whatever comes under the kingdom, it should be well protected. And that is why Raja is not for the bhoga, but for the tyaga, is very important concept given by our Rajaniti. And when we think of the benediction in the Arthashastra, Shukracharya, who is the preceptor of demons, naturally they are cunning in nature. The Challa and Kapata were their weapons, and Chanakya was not against of using them if if the enemy is using that. But the ultimate aim is the benefit of all beings, and the ultimate aim is to create the Devaraja where everyone can stay happily. That is the entire concept of Arthashastra. And the composer of Arthashastra, if you will see, basically, if you want to understand Chanakya, it is necessary to understand the drama Mudra Rakshas. Because Kautilya, Kutilamatihi Kautilyaha saha yena dahi Nandavamshaha. That is the sentence in Mudra Rakshas, which indicates that he burned the complete dynasty of Nanda family. And that is why we always take Kautilya as a crooked one. But when we go through the drama, and at the end, when we reach to the drama, we realize that yes, we need such person every now and then, who is away from all selfishness, and who is constantly thinking of the well-being of the king and the kingdom. And that should be the aim or thinking of everyone in the society and in the nation. And that is why learning Kautilya is very important according to me. So thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your insightful lecture. Your expertise and engaging delivery captivated our audience, definitely leaving a lasting impact on all of us. Thank you for sharing your knowledgeable and inspiring us with your words. We are honored to have you had the privilege of learning from a distinguished speaker like you. Thank you once again, ma'am. It is my distinct honor to welcome our distinguished speaker, Dr. Chandra Prakash Dwivedi, sir, today, who bring a wealth of knowledge on the timeless wisdom Kautilya. A visionary strategist and political theorist from ancient India, Kautilya's teachings continue to inspire and guide us in navigating the complexities of leadership and governance. Dr. Chandra Prakash Dwivedi is a Padma Shri awardee, actor, director, writer, and historian. Dr. Dwivedi, a qualified medical professional, abandoned his medical career due to his profound interest in Indian history and literature, transitioning to work in the theatre. Between 1990 and 1992, he wrote, directed, and acted a TV serial Chanakya, which gained immense popularity in India for its well-crafted dialogue, command of Hindi, and insights into politics and philosophy. He has also directed the 1996 television series Mrityunjay, which was based on the life of Karan, one of the main characters of epic Mahabharata. His other major work is 2003 film Pinjar, based on Amrita Pritam's novel, 2008 television series Upanishad Ganga, movies like Z+, Muhilla Assi,
Samrat Prithviraj, and many more. In 2009, the South Asian Cinema Foundation honored Dr. Dwivedi with its Cultural Catalyst Award, recognizing his dedication to exploring India's ancient culture and history in television and popular cinema. In January 2022, he was awarded with prestigious Padma Shri Award by the Government of India. Thank you, sir, for joining us today for this program. Without further ado, please join me in extending a warm welcome to our distinguished speaker, whose expertise will undoubtedly enlighten and enrich our understanding of Kautilya and his profound contribution to the art of governance. Welcome, sir, once again. Thank you, everybody. ईर्ष्या को मैंने बहुत परेशान किया, कभी हाँ कभी ना कभी हाँ, लेकिन सिनेमा के लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। इस समय भी मैं आपने देखा होगा मैं अलग अलग रूमों में भाग के इंटरनेट खोजता हूँ। इस बीच 10 फोन आ रहे हैं, सबको मैंने लिख कर भेजा है कि मैं जूम कॉल में हूँ। मैं जैसे ही बाहर आता हूँ उससे बात करता हूँ, परंतु जैसा कहा जाता है कि विद्वानों की सभा में मौन रहना चाहिए। सर आपका कैमरा ऑन कर दीजिए सर, वी वांट टू सी मैं यू। अभी करता हूँ मैं अपना कैमरा ऑन। मैं तो डर के कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे खुद को पता नहीं है। मैं अभी करता हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात। हम लोग आपको देखना चाहते हैं सर। एक मिनट, ये उपकरण मेरे लिए बड़ा नया है। फिल्म वालों के लिए सर, राइट सर। जी 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 कुछ जी, नया नहीं होता है। थैंक यू सर। प्रणाम सर। तो प्रणाम। तो जहाँ आसावरी बापट उपस्थित होती है वहां मैं कोशिश करता हूं कि मैं चुप रहूं, इसलिए कि वो अर्थशास्त्र की विद्वान है और मैं अर्थशास्त्र का प्रेमी हूं। तो मेरा रिश्ता अर्थशास्त्र से वही है। पर मैं आपको एक घटना बताता हूं कि जब मैंने ये तय किया कि मैं चाणक्य पर काम करूंगा, मैं नहीं जानता था कि मैं कहां पहुंचने वाला हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं उसके दो पक्ष हैं। उसका एक पक्ष था साहित्य। साहित्य में बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, बहुत सारे उसके स्रोत हैं। कथा सरित सागर है, वृहत कथा मंजरी है, मुद्रा राक्षस, उसका मूल स्रोत जो है वो मुद्रा राक्षस है। और मुद्रा राक्षस को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी कथाएं लिखी गई, बहुत सारे नाटक लिखे गए। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो जानते होंगे कि प्रसाद जी का एक बहुत ही सुंदर नाटक है चंद्रगुप्त। लेकिन अर्थशास्त्र पढ़े बिना ये सारे काम पूरे नहीं हो सकते हैं, ये मुझे समझ में आ गया था। और मैंने कई जगह पढ़ा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र क्या है, मैं ये पुस्तक लेना चाहता था, देखना चाहता था। उन दिनों आज जितना आसान हो गया है कि पुस्तक आप अमेजोन से मंगा लें या फ्लिपकार्ट से मंगा लें, उन दिनों पुस्तक मंगाना आसान नहीं था। या तो आप किसी पुस्तकालय में जाएं तो, या आप किसी पुस्तक की दुकान पर, वो भी जहां इंडोलॉजी की पुस्तकें मिलती हों। तो खैर मेरे कुछ मित्र जो पढ़ाते थे, मैं उनके कॉमर्स की कॉलेज में गया और मैंने उनसे पूछा कि क्या यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र है। तो उनके पुस्तकालय में कौटिल्य अर्थशास्त्र था। तो मैंने अपने उस मित्र के अकाउंट में वो पुस्तक ली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पुस्तक पर वो पहली बार, जिसको हम इशू का ठप्पा कहते हैं, वो ठप्पा लगाया गया। और मैंने देखा कि 25 वर्ष पहले वो पुस्तक उस पुस्तकालय में आई थी। 25 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति ने उस पुस्तक को देखा नहीं था। मुझे लगता है उस पुस्तकालय में मैं वो शायद पहला ऐसा व्यक्ति था जो उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं था, पहला ऐसा व्यक्ति था जिसका अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। एक चिकित्सक अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहता है। और उसको जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने और एक हिंदी अनुवाद देखा, वाचस्पति गैरोला का। उनको ढूंढते ढूंढते मुझे समझ में आया कि आरपी कांगड़े का जो अनुवाद है वो सबसे श्रेष्ठ अनुवाद है। अब जो आपको आरपी कांगड़े का अर्थशास्त्र मिलता है वो 3 भागों में है, मोतीलाल बनारसी दास का। उस समय मुंबई यूनिवर्सिटी की पुस्तकें थी जो 2 हिस्सों में थी, जो मैंने खरीदी। और बाद में, जैसे मैं पुस्तक हमेशा दूसरों को देता हूं, इसलिए देता हूं कि वो पुस्तकें वापस कभी नहीं आएगी ये जानते हुए, फिर भी मैं देता हूं। तो मैंने वो पुस्तकें पढ़ी
और चूंकि आज मुझे कहा गया कि ये कार्यक्रम का समापन है, आपके पाठ्यक्रम का समापन है, और इसलिए मुझे कुछ कहना है, तो हमारे यहाँ वैलिडेक्टरी समावर्तन, जब कोई भी शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसको समावर्तन कहते हैं। और समावर्तन के समारोह में बहुत संक्षेप में होता था वैलिडेटरी स्पीच। और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आसावरी जी टोकें, वो सिर्फ 5 शब्द थे। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। पूरी भारतीय शिक्षा प्रणाली या पूरा भारतीय चिंतन इन 5 वाक्यों के आसपास आके ठहर जाता है समावर्तन के संदर्भ में। और आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सच बोलना जीवन में कितना आसान है। और हम सब खुद को टटोल कर देखें कि हम कितना रोज सच बोलते हैं। यानी हम सच, सभी ये स्वीकार करेंगे कि सच बोलना आसान नहीं है। यदि सच बोलना आसान होता तो शास्त्र ये आदेश न देते कि सत्यम वद, धर्मम चरा, धर्म का पालन करो। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूं धर्म का पालन करो, तो मुझे द्वैपायन कृष्ण, भीष्म, वेद व्यास आदि याद आ जाते हैं, जो महाभारत में कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर बार बार कहता हूं कि मनुष्य, तू धर्म का पालन कर, उसी से तुझे अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। यानी धर्म का पालन उस समय भी कितना कठिन था, वरना ये इस बात की चेतावनी बार बार नहीं देते। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्मम चरा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव पर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगा। परंतु साथियों, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो क्या है जो, जैसा मैंने समझा आप लोगों से कि आपके बीच में बहुत सारे शिक्षक हैं, जो आसावरी जी ने कहा, मैं वहीं से उस सूत्र को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि कौटिल्य उस पाठशाला में, जो इस देश में अर्थशास्त्र की पाठशालाएं हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें एक पाठशाला है। ऐसी कई पाठशालाएं पहले से रही हैं, जो हम कई बार बृहस्पति, कई बार शुक्र, कौणबदंत, पिशुना, ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए और उन बहुत सारे आचार्यों ने अपना मत रखा। शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, विदुर नीति है, बहुत सारी नीति पर पुस्तकें लिखी गई जो मौखिक परंपरा में हम तक पहुंची। लेकिन कौटिल्य की विशेषता क्या है, जो मुझे उनके व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पक्ष लगा, मैं उसी पर 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। उनके व्यक्तित्व का सबसे जो मुझे अच्छा पक्ष लगा कि पहले उन्होंने उनके पूर्ववर्ती जितने अर्थशास्त्र के आचार्य हैं उनका गहन अध्ययन किया, मनन किया, ग्रहण किया, चिंतन किया, और उसके बाद जहां जहां जरूरी लगा उनके विचारों का खंडन भी किया और अपने मत का प्रवर्तन किया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आज जो शक्ति सबसे क्षीण हुई है हमारी आचार्य परंपरा में, कि हम महिमा मंडन में लगे रहते हैं, हम दूसरे के मतों का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। और हम में ये साहस नहीं होता कि यदि हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान में इस मत की आवश्यकता नहीं है, या ये मत कालबाह्य हो चुका है, ये अपनी उम्र जी चुका है, तो उसका खंडन और नए मत का प्रवर्तन हम नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी विचार हमारे सामने रखा जाए, क्या हम उस विचार पर चिंतन, मनन, मंथन और उसके बाद कोई ऐसा निष्कर्ष हो सकता है जो उससे सहमत ना हो, तो हमें भय लगता है। तो कौटिल्य के इस अप्रोच से मुझे लगता है शिक्षक को, पढ़ाने वाले को सबसे पहले निर्भय होने की आवश्यकता है। यदि निर्भय नहीं होंगे तो आप उस
शिक्षा की परंपरा में, उस विचार की परंपरा में जो वैदिक काल से वर्तमान तक आ रही है, उसमें नया नहीं जोड़ेंगे। और शिक्षा का अर्थ सिर्फ दोहराव नहीं होता है। मेरा मानना है कि आप सबके अपने अनुभव होंगे और उन अनुभवों के आधार पर हम अपने शास्त्रों को देखें, पढ़ें, उसका मूल्यांकन, इस शब्द को इस्तेमाल करने में मैं डरता नहीं हूं, इसलिए कि हम सभी ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती को कई बार मैं क्रांतिकारी इसलिए भी कहता हूं कि उनमें यह साहस था कि जहां उन्हें यह आवश्यकता लगी, उन्होंने वेदों के सामने किसी भी ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया। वो सही है या गलत है मैं ये नहीं कहता हूं। उन्होंने गीता को भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने रामायण महाभारत को भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सारे पुराणों को गप्प कहा। ये नैतिक साहस उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने भारतीय चिंतन को बड़ी गहराई से समझा और उसे अस्वीकार करने के बाद भी स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे समाज के आदरणीय व्यक्तियों में हैं, पूजनीय व्यक्तियों में हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछूंगा, आप सब पढ़ाते हैं, कि यदि आज हम किसी विचार का खंडन करते हैं तो कितनी देर आप सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर जिंदा रहेंगे? क्योंकि थोड़ी देर में आपका फेसबुक पर या जिसे सोशल मीडिया कहते हैं उस पर आपकी हत्या हो चुकी होगी। मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि मैं हत्या शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। महाभारत के युद्ध में आसावरी जी को ये प्रसंग पता है और मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने मुझे कहा ये प्रसंग है। महाभारत के युद्ध में 10 दिन बीत चुके हैं, भीष्म जीवित हैं, खर्च हो रहा है, कोष की चिंता है और युधिष्ठिर को लग रहा है कि इतना व्यय हो रहा है, ये सब कहाँ आएगा। और इसी अर्जुन ने कहा था कि मैं तो एक दिन में युद्ध का निर्णय कर दूंगा। तो युधिष्ठिर अर्जुन से थोड़ा सा नाराज है और उसे कहते हैं कि तुमने अपने इस धनुष की बड़ी बड़ाई की थी। और उन्होंने अर्जुन की निंदा की और अर्जुन की निंदा के साथ साथ उन्होंने गांडीव की भी निंदा की है। और महाभारतकार व्यास ऐसा लिखते हैं कि उस समय अर्जुन क्रोधित हो गया और वह अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को मारने के लिए खड़ा हुआ, इसलिए कि उनका ऐसा प्रण था कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसकी मैं हत्या करूंगा। तो महाभारत के युद्ध में दूसरे भाइयों के साथ युद्ध तो अभी ठहरा हुआ है, अभी दो बड़े भाइयों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और अब ऐसे में कृष्ण को हस्तक्षेप करना है। क्या करें? उन्हें अर्जुन के प्रण की भी रक्षा करनी है। तो वे वहां पर अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुझे यदि अपने भाई की हत्या करनी है तो मैं तुझे एक मार्ग बताता हूं, तो अपने भाई की निंदा कर। किसी व्यक्ति की निंदा उसकी हत्या है, ये मार्ग ढूंढा। और उसके बाद महाभारतकार कहते हैं कि अर्जुन ने युधिष्ठिर की निंदा की। उस निंदा में उसके आत्म अनुभव थे, जो द्रौपदी को जीतने के बाद द्रौपदी को बांटने से जो उसे दुख उत्पन्न हुआ था, वो उसने उस वक्त कहा। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूं। इसके बाद दूसरी उसकी जो तुरंत प्रतिक्रिया थी कि अपने भाई की निंदा करने के बाद वो दुखी हो गया। उसके मन में विचार आया कि मैं ये कैसे कर सकता था, मैंने अपने भाई की निंदा कैसे कर दी, कैसे मैंने अपने भाई की वैचारिक हत्या कर दी। और वो स्वयं आत्महत्या करने के लिए अब तत्पर हो गया है और युद्ध छोड़कर धनुष रखकर वो कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। कृष्ण के लिए फिर युद्ध के मैदान में एक नई चुनौती कि थोड़ी देर पहले जो अपने भाई को मारने के लिए तत्पर हो गया था, अब वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गया है। तब कृष्ण वापस युक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं और वे अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आत्म प्रशंसा आत्महत्या है, तो तू अपनी प्रशंसा कर। उसके बाद अर्जुन अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं कि मैं कैसा वीर हूं। यानी हमारा मन या तो दूसरे के निंदा और आत्म प्रशंसा के बीच हमेशा झूलता रहता है, परंतु इसके आगे जो जाकर है वो उसको मैं आलोचना कहता हूं। आलोचना एक स्वस्थ परंपरा है और इसलिए कौटिल्य में उस साहस का अभाव नहीं था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की आलोचना की।
जैसे आपके यहाँ बहुत सारे विद्वान अर्थशास्त्र के आए होंगे, उनमें से कुछ की मुझे आलोचना करने में कोई गुरेज नहीं होता, पर इसके पीछे मेरा भाव ये नहीं होता है कि मैं उनकी निंदा या उनके योगदान को कम आंकूं। हमेशा जब भी आलोचना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान के विस्तार की भी एक भावना होती है। तो मुझे जो कहना था, मैंने ये अवसर आप लोगों से इसलिए आज छीना, खास तौर पर ईशा से मैं कहूंगा कि हम पढ़ने पढ़ाने वालों को थोड़ा सा साहसी होना पड़ेगा, और हमारे आसपास हमारे समकालीन समाज में जो कुछ भी हो रहा है, आचार्य होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है कि हम पहले उस ज्ञान की परंपरा को पाएं, उसको सुरक्षित रखें, उसको संवर्धित करें। वो संवर्धित किस प्रकार से होगा? जब हम उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ले जाएंगे और उसमें नई धाराएं जोड़ें, जैसा कि कौटिल्य ने किया था। आसावरी जी ने उस पर संकेत किया था नंद के उद्धार के बारे में, कि जिसने शस्त्र शास्त्र और नंद का उद्धार किया, उसने अर्थशास्त्र की रचना की। इन तीनों में यही प्रतीक है कि एजुकेशन एंड लर्निंग शास्त्र है, साइंस ऑफ वॉर, साइंस ऑफ वेपन ये शस्त्र है, और नंद ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो नृशंस है, आतताई है। और इस तीनों के उद्धार, मारा नहीं लिखा है उन्होंने, उद्धार किया, मैंने उसका कल्याण किया। मैंने शास्त्रों के अर्थ, कामांदक लिखते हैं कि नीति शास्त्र का जो समुद्र है उसमें से जिसने नवनीत अमृत निकाला, ऐसे कौटिल्य को प्रणाम, ऐसे विष्णुगुप्ताय वेद से ऐसे विष्णुगुप्त को प्रणाम। तो मैं आज इसी बात पर अपनी बात समाप्त करता हूं। थोड़ा समय कम है, मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, पर अगली बार मैं बिल्कुल तैयार हूं विद्वानों के साथ कुश्ती करने के लिए, लेकिन मेरी सारी कुश्तियां फिल्मकार के तौर पर होंगी, क्योंकि मैं मूलतः आप जो लोग खोजते हैं उनको बिंबों में, चित्रों में दिखाने का प्रयत्न करता हूं। पर यदा कदा मैं कुछ पढ़ते रहता हूं और उसमें बहुत सारे मुझे वही याद रहते हैं जो सिनेमा के लिए बड़े काम के होते हैं। तो उस तरह के एनोक्डॉट्स मुझे बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव का मैं नाम सुन रहा था, जिन्होंने टैक्सेशन पर आपके सामने बहुत सारे विचार रखे होंगे, परंतु एक मुझे बड़ा अच्छा विचार मनुस्मृति में मिला, जिसमें डॉक्टर आसावरी बापट मेरी विशेषज्ञ थी। हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था गवर्नेंस एंड सिविल सर्विसेज इन एंशिएंट इंडिया, लोकसभा टीवी के लिए। इसको स्वराज्य संहिता के नाम से जाना जाता है। तो मनुस्मृति में एक ऐसा भी विधान आता है कि जिस आय पर कर नहीं दिया गया वो धन अपवित्र है, जिसे हम आज ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन है। ये कोई नई कल्पना या आधुनिक कल्पना नहीं है, इसका उल्लेख मनु महाराज ने कर दिया है। और उससे एक बड़ी मजेदार बात और भी मुझे मालूम पड़ी कि जिस व्यक्ति के पास कर देने के लिए कुछ नहीं है, उस व्यक्ति से क्या लिया जाए। तो प्राचीन मनीषियों को, प्राचीन विचारकों को, इस प्राचीन दार्शनिकों को इस बात का भी ध्यान था कि शायद किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो सकती है जो आपको कर नहीं दे सकता। मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं हरिश्चंद्र और तारामती का, कि जब हरिश्चंद्र की पत्नी स्मशान में गई है तो उसके पास कर देने को धन नहीं है, मैं उसे छोड़ देता हूं। तब हमारे विचारकों ने यह कहा कि यदि आपके पास कर देने के लिए धन नहीं है तो आप अपने पुण्य का छठा हिस्सा या अपने पुण्य का एक हिस्सा समाज को, राजा को दें। कई बार मैं सोचता हूं कि इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, कौन सा पुण्य जो मेरे पास संचित है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो सामाजिक चेतना की बात है कि यदि आप कर नहीं दे सकते हैं तो आपके पास जो भी संचित ज्ञान है, जिसे मैं एक तरह की संपत्ति मानता हूं, उसका समाज में वितरण करें, दान करें। वही समाज को उसका ऋण देना, उसका कर्ज देना होगा। तो जितनी बार आप समाज को जो जो आपके पास संचित है वो दे रहे हैं, मैं समझता हूं वो सामाजिक ऋण से, सामाजिक कर से आप मुक्त हो रहे हैं। यही बात कह के मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं
जब भी ईशा मुझे बहुत समय देना और इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहना कि मैं हाँ कह के भी नहीं आऊंगा। सर अब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप बाकी लोगों से मिल लिए, वही आपको इनवाइट करेंगे, आप हमारे कॉलेज में आएंगे अब नेक्स्ट। क्योंकि मेरा तो मानना है कि धोखा देना भी एक कला है, मैं उस कला में माहिर हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वो धोखा लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कुछ सीख ले, हम आज कितना सीख लिए और आगे भी जब आप धोखा देंगे तो भी हम कुछ सीखेंगे। नहीं, मैं आऊंगा। मैंने ईशा को बहुत परेशान किया। मैंने इसे ये भी कहा कि हम लोगों ने डॉक्टर आसावरी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक सीरीज बनाई थी, उसमें कौटिल्य पर 3 प्रकरण है। उन 3 प्रकरणों को मैं थोड़ा और छोटा करवा देता हूँ और आपके सारे विद्यार्थियों के लिए वो चलाया जा सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अब अभी भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ समय के लिए, परंतु मैं अपने एडिटर से कह के मैं उसे थोड़ा सा बताऊंगा कि वो करे, और मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे कम से कम इसलिए बुलाइए कि मैं आप लोगों को सुन सकूं। बहुत अच्छे सर, बहुत सुनकर मुझे हमेशा लगता है हमारे लिए गिफ्ट होगा सर, हमारे लिए यूनिक फीचर हो जाएगा इस इंस्टीट्यूशन के लिए। मैं सुनूंगा, और बीच बीच में मैं ऐसा भी आप लोगों से कहूंगा कि गप्पा गोष्ठी का एक सेशन रखा जाए कि जिसमें कोई विषय नहीं हो, सिर्फ गप्पे हो, और मुझे लगता है उससे बहुत सारी बातें निकलेंगी। गप्पे मारने में तो शिक्षक बहुत तेज है सर। हाँ, और नहीं, सारी बातें उसी से निकलती है। कई बार हम लोग बड़े डरते हैं, हम लोग को लगता है कि सारे जो सेशन हो बड़े शैक्षणिक हों, परंतु मुझे लगता है कि आप एक कट्टा बनवाइए जो हमारा अड्डा डिजिटल इस पर ही चले, और देखिए इतनी सुंदर सुंदर बातें निकलेंगी। और उन विद्वानों को बुलाइए, जब वो अखाड़ेबाजी करेंगे तो जिन जिन विषयों की हमने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे ऐसे विषय हम लोगों के सामने आएंगे। तो इसी के साथ मेरी आप सबको बड़ी शुभकामनाएं, और मैं बिल्कुल अभी दौड़ रहा हूं। मैं आपको बता भी दूं किस लिए जा रहा हूं, क्योंकि आपको ये छोड़ने से आपको मेरी शिकायत कम हो जाएगी। 25 तारीख को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, आप लोग जानते होंगे। जी सर। दूरदर्शन उन पे कुछ कार्यक्रम कर रहा है, और उन्होंने मुझे उसकी एंकरिंग के लिए कहा है। वाह, क्या बात है। दूरदर्शन की टीम आकर बैठी, अब मैं जाऊंगा, वो मुझे देंगे, मैं उसे याद करूंगा और फिर बोलूंगा। इसलिए आप सबसे क्षमा। और ईश और विशाखा, तुम दोनों को प्रणाम भाई। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, और तंग बहुत करते रहना। धन्यवाद सर। मैं तंग होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद सर। सर डेफिनेटली सर, जरूर मिलेंगे दोबारा। इसी के साथ इट्स सभी को रियली प्रणाम। एन ऑनर फॉर अस। मैं बहुत जल्द, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू। आप बड़े बड़े कामों में, बड़ी स्क्रिप्ट में व्यस्त रहते हैं, जैसे मैंने आपसे कई बारी बात करी, एंड कुछ देर के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ पाए। थैंक यू सो मच, एंड वील टेक दिस एसोसिएशन फॉरवर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और प्लस धन्यवाद। आपके आने से थोड़ा हमारे इस प्रोग्राम में ग्लैमर क्वेश्चन भी ऐड हो गया, तो क्योंकि आप टेलीविजन और अगली फिल्म बार इंडस्ट्री पैसे से भी जुड़े लूंगा रहते हैं। जी, चिंता ना करो। जरूर जरूर, ढेर सारे पैसे देंगे सर हम। थैंक यू। बस मैं अपना कर्ज उतारते रहूं ना, मेरा जो सामाजिक ऋण है, ऋषि ऋण है, मैं इसी तरह से चुकाते रहूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक आई यू एम सर। टेकिंग योर लीव। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। So it's a vote of thank for sir, but sir has a very short time for us. So just the valuable session he has given us, his expertise and eloquence have made this session truly invaluable, inspiring us to reflect on the timeless wisdom of Kautilya. On behalf of everyone present, I extend sincere thanks for sharing the knowledge and engaging us in this session to both Asavri Bapat ma'am and sir. Now, I would like to invite Ms. Isha Gangwani, convener of this program, for the formal vote of thanks. Good afternoon, everyone. Sir has Chandra Prakash sir has already left, but I would again like to thank him for joining this program. एंड सर का जैसे मैं समझती हूँ, ये प्रयास रहता है कि थ्रू द टेलीविजन एंड फिल्म मीडियम ही इज एबल टू रीच आउट द यूथ एंड पास ऑन द नॉलेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री.
And I'm sure this is also a good platform, and through the university teachers, we will be able to, channelize his idea of history to the youth of the country. I would also like to sincerely thank Dr. Asavari Bapaji. Ma'am has been the external advisor of the program, and also she has contributed video lectures for the course. And as we were working with ma'am, since she's a Sanskrit scholar and has also explored the real Arthashastra text, her lectures have actually added much depth to the course, and she helped us shape it so thoughtfully and beautifully. So in fact, जैसे कि Chandra Prakash ji ने कहा, I would like to repeat, actually it's an honor for us that we could have विद्वान और प्रेमी हम दोनों को इस प्रोग्राम में अपने साथ जोड़ पाए. So it's really a privilege for us. And my sincere thanks to Dr. Jigar Inamdar, who is the chairman of the governing body of the college. He sensitized us and encouraged us to not only expand our own knowledge, bandwidth of knowledge towards this area, but also encouraged us to design a course like this. And I would like to thank our principal, Professor S.P. Agarwal, who's also the director of the Teaching Learning Center, Professor K. Latha, and director IQAC. She's the director IQAC and program director, for their constant support and encouragement for shaping up such a program. And finally, a big thanks to my team, starting from Dr. Aprajita Majumdar. She is the co-convener of the program. She's a faculty in the Department of Political Science in the college. Dr. Vishakha Sharma, she's a faculty in the Department of Economics. Mr. Chandan Kumar Sharma, faculty in Department of Management. I would like to thank my team for all their constant support, and they actually helped me pull this together. And of course, I should not miss out on mentioning the technical support team. Dr. Starting from Nikhil Rajput and Mr. Vipin Rathi from the Department of Computer Science, Dr. Ashish Kumar Shukla and Dr. Sachin Tomar from Department of Statistics, Ms. Shipra from Department of Political Science. It's not possible to execute such a program, which is an online program, without a technical support team. And of course, the technical and media lab assistants, Anil ji and Vinod ji, and IT assistant Ravinder ji. Finally, a thanks to all our participants who have been consistent with the program. Congratulations on the completion of the course. Thank you so much. Thank you. We can actually... We can stop the live stream. रविंदर जी, लाइव स्ट्रीम बंद कर सकते हैं. Let me just call him.